So do these questions I gave you in homework as well. अभी आप करके मुझे बताइए जल्दी से what I'm going to give you now. Yes, we have done this question. Second question we have done, I suppose. Third question, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. Acceleration is given 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? After the start लिखा हुआ है students, just have a look. Start लिखा हुआ, it means u is 0 and time is 3 seconds. आपको पहले v निकालना है and then what it is asking, what be its velocity 3 seconds after the start. So you need to take out v. U has given, a has given, time has given. तो आपको velocity निकालनी from the first equation of motion. I suppose you can take out this and no need to convert meter, centimeter and everything. All is fine. Just take it out this answer and let me know fast. Take it out this answer and let me know right now. Again, I'm telling you, u is 0. Ma'am, v is 5 meter. v is equal to u plus 80 है, तो v is equal to u plus 80 से you can directly take out the value of v. So I think there is no problem in this question. If you have problem, then ask me. Directly you need to put the formula v is equal to u plus 80. Is it clear, everybody? If you have doubt, then the next question, if you have done, we can go to the next question now. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Acceleration is given 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? Again, time is given, u is given, and you need to take out the distance. You need to take out the distance. Ma'am, 40 meter is the distance. Who is this? Name yourself. Name yourself. Ma'am, Shlok Jain. Shlok Jain is only doing the answers. Rest of all are, what are they doing? क्या कर रहे हो बाकी के? Just go through. S is equal to ut plus half at square. No need to take out v here. Directly you need to take out the distance. S is equal to ut plus half at square से फटाफट ये problem solve कीजिए and let me know. Have you done? Yes, ma'am. Have you done? ट्रॉली वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया बेटा? What was the answer of this question? ट्रॉली वाले क्वेश्चन का 6 meter per second. कितना? 6 meter per second. 6 centimeter 6 per meter second. per second. Yes, ma'am. Sorry. 6 centimeter per second. 6 meter per second. करेक्ट आंसर. फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है आपके? एस कितना आ रहा है? डिस्टेंस कितना आ रहा है? 40 meter per second. 40 meter per second. नहीं, हाउ कैन इट Yes, कम? ma'am. नो 210 meter. Meter per second only. I have done it earlier too. नो 200 मीटर शुड बी करेक्ट आंसर. 200 मीटर आना चाहिए इसका आंसर. मैम 200 मीटर है. एग्जैक्टली. Yes, ma'am. S is equal 200 to, meter is answer. again I am telling you, S is equal to ut plus half at square. S आपको निकालना है. U is given after the start. U is given 0. Time is given 10 second. And acceleration is 4 meter per second square. कोई problem नहीं इस question में. You need to put the formula S is equal to ut plus half at square and then answer can come. मैम हाँ जी बोलो. मैम मीटर पर सेकंड जैसा हम लिखते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है. सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है. ठीक है. और इसमें जो डिस्टेंस आएगा दैट शुड कम इन मीटर्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन. A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meter per second. अब आप एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपके इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली. आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी मैं बता दूंगी, बट नाउ दिस क्वेश्चन हैज कम, सो यू नीड टू
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। जब आपके इस तरह से लाइक हॉरिजॉन्टली कोई चीज चल रही है, यानी ऑन द रोड, ऑन द वे कोई चीज चल रही है, तो आप उसमें एक्सेलरेशन इज गिवन हियर। लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी। जब आप इसको अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकते हो कोई चीज, या ग्रेविटी की तरफ कोई चीज फेंकते हो, या अगेंस्ट ग्रेविटी कोई चीज फेंकते हो, तो यहाँ पे जो आप एक्सेलरेशन लेते हो ना, दैट एक्सेलरेशन इज स्मॉल g, gravity wala acceleration due to the gravity, and that small g value is always taken 10 meter per second square. Are you clear everybody? Are you clear? Am I clear? Yes, ma'am. आप जब कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हो या नीचे की तरफ फेंकते हो, then we have to take the value of a is 10 meter per second square, and that value of a we assume at small g. Small g is the acceleration due to the gravity. ठीक है, तो acceleration due to the gravity is always 10 meter per second square. इसकी exact value होती है 9.8 meter per second square, लेकिन हम उसको 10 meter per second square लेते हैं, ठीक है, for our convenience. So we are taking acceleration, यानी acceleration is 10 meter per second square. U is actually 0. V is 5 meter per second. If the acceleration of the gravity is 10 meter per second square, मैं आपको बता चुकी हूँ acceleration 10 meter per second square we have taken. If the downward direction, what will be the height? Height मतलब यहाँ पे आपको distance लेना है क्या? आपको distance निकालना है. Just go in this and take out the answer. आपको यहाँ पे height की जगह क्या लेना है? Distance लेना है. Hotspot on कर चलिए. इसका ऑन है क्या हॉटस्पॉट? बेटा इट्स पावर प्रॉब्लम, वाईफाई से कनेक्टेड है ना, गोइंग टू कनेक्ट विद हॉटस्पॉट. Ma'am, 1.25 meter is the distance. Just a minute beta. Actually I have power cut problem right now, and I have connected my phone with hotspot. Sorry, I have connected with my laptop with hotspot. Akhilesh, 0.5 meter. Actually again listen me carefully what I'm saying to you. आपने u क्या लिया? 0. u 0 नहीं लेना. Actually again have a look. The question is a stone is thrown in vertically upward direction with velocity of 5 meter per second. Sorry to say यहाँ पे u आप 5 लोगे. u is 5 here. Again do the question. If the acceleration the stone during motion is 10 meter per second square, acceleration is given in the downward direction. तो v आपका यहाँ पे u आपका गिवन है आपको, एंड v आपको यहाँ पे जो लेना पड़ेगा वो 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप ड्यू टू द एक्सेलरेशन, है ना. तो v 0 लीजिए. अब आप इसको करिए जल्दी से. डू इट नाउ.